Hello friends, welcome to Genius Education. And here is the topic that we are going to talk about: atmosphere. Atmosphere is the main or most important component on earth, which is play a very important role for survival of organism. Without atmosphere, there is no life on the earth. So the atmosphere consists of many different gases such as nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and other gases like helium, argon, and hydrogen. Here is the largest amount, that is 78%, is nitrogen, and which is very less, 0.03%, that is carbon dioxide. Even nitrogen is the most important component for plant growth. If this is a plant, अगर एक plant है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस से प्लांट खुद के लिए फूड बनाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड absorbs water from soil. Even the plant cannot produce or cannot make, that is nitrogen, from the atmosphere. That's why plant receive the nitrogen from the soil. soil में कैसे होता है? बिकॉज कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको N2 बैक्टीरिया कहा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन फाइंग बैक्टीरिया प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं, और वो नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाते हैं, जिसके वजह से प्लांट सॉइल से अब्जॉर्ब करके खुद का फूड बनाता है. एंड हियर दिस एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, there is even different animals also, and the plant which is released oxygen, and oxygen is the one of the best component and most important component for surviving the animals, where the plant which is releasing oxygen by using CO2, okay, the plants make glucose C6H12O6, यानी ग्लूकोज का केमिकल नेम है, with oxygen which is released, which is used by animals. All right. So here is this different layers of atmosphere. You can see these are the different layers. Let's see. The first layer is known as this one, which is extend up to 0 to 18 किलोमीटर्स. इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, जिसका सेल्सियस लगभग 15 to 56.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, दैट इज़ -56.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है. उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है. स्ट्रेटोस्फीयर का जो एक्सटेंड है लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर. एंड हियर वी कैन सी अनदर थिंग इज दैट mesosphere which is extend up to 90 kilometers, that is mesosphere. And another one is thermosphere, which is extend up to 800 kilometers, and the temperature is -86.5 to 1200 degrees Celsius. And here is this exosphere, is the outermost layer of the atmosphere. And let's see something very important, the structure here and different functions and कौन सा लेयर में क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं. इसमें सबसे पहला दैट इज ट्रोपोस्फीयर, जो कि लगभग 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो, दैट इज़ फ्रॉम द सॉइल और दैट इज़ फ्रॉम द surface of the earth, which is a present rainfall that's happening here, fog and hailstorm occurs in this layer. Another thing is a stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ से जो एरोप्लेन उड़ते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं. दिस इज फ्लाइंग एरोप्लेन्स एंड विच इज़ एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर्स, and which is
contain ozone gases. This is very important, which is contain ozone gases. अगर पूछा जाए ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, हमको बोलना है स्ट्रेटोस्फीयर में. Here another one is mesosphere. This is the third layer of the atmosphere, okay, which is extend up to 85 kilometer, which is above the stratosphere. This is known as mesosphere. Meteoroids born on this layer intruding from the space. यानी जो meteoroids space में होते हैं, अगर these are intruding into the towards the earth, these are reflect back and born into this layer is known as mesosphere. This layer is known as mesosphere. मेजोस्फीयर जो लेयर है, इस लेयर में इंटर नहीं कर पाएंगे, जो कि मेटीरोइड्स होते हैं, वो बॉर्न हो जाएंगे इसमें. और इसका जो टेम्परेचर है सबसे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो इसको कहते हैं विच इज़ कोल्डेस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेजोस्फीयर, विच इज़ लगभग -140 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, एंड देयर इज द थर्मोस्फीयर. दिस इज the fourth most layer of the atmosphere. The temperature is rapidly rises, and there is, I think, extend up to 85 to 400 kilometers. Even ionosphere is the part of this layer. Ionosphere को हम thermosphere का एक part के हिसाब से पढ़ सकते हैं. And this layer is very important because of the radio transmission which is happening. If this is the earth, अगर ये अर्थ है तो इसमें जो लेयर्स हम बात कर रहे हैं that is ionosphere. ओके, सो हमारे अर्थ में बहुत सारे रेडियो वेव आता है, जो रेडियो वेव वहाँ से बैक हो जाता है, दैट इज़ रिफ्लेक्ट होता है, तो वी कैन से विच इज़ कम बैक टू द अर्थ, जिस वजह से कि हम रेडियो कम्युनिकेट जो तरंग आता है उसे सुन पा रहे हैं. इवन different lasers which has comes from the sun is known as X-ray, and the UV radiations, these are comes from the sun which are prevalent from this layer. अगर एक्सरे और अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन सन से आ रहे हैं तो वो इस जो लेयर है ना, इस लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, अर्थ में इंटर नहीं कर सकते हैं. एंड हियर इज दिस अनदर थिंग, exosphere. Exosphere is the outermost layer of the atmosphere, we know. So this layer is a very thin layer, and very lightest gases like helium, hydrogen float in the space. All right, and this is about, and thanks for joining me, and subscribe this channel to get latest